Good afternoon, sir. Sir, your mic is mute. Yes, good afternoon. Yes, let me start basic introduce yourself. Yes, sir. Sir, my name is Soumya Singh. I am from Balia, Uttar Pradesh. Currently, I am staying in Chandrapur, Maharashtra. I have done matriculation from Memorial Public School, Balia. After that, I have completed my intermediate from Kendriya Vidyalaya Ordnance Factory, Chanda, Chandrapur, Maharashtra. After that, I have completed my graduation from Gondwana University, Chandrapur, and recently I have completed my master's degree from Institute of Science RTM Nagpur University. And my hobbies are singing, cooking, and sometimes watch motivational movies. Thank you, sir. Yes, good. Then next move on direct chemistry. Yes, no. What the main application of NMR spectroscopy? Sir, basically, NMR spectroscopy is used for detecting the molecular structure of the molecular structure of the compound, and it is used it is basically depend upon the I value, that is the spin value. If the spin is equals to integral half or the positive digit, therefore the NMR spectra is shown. And if the spin of the any element that is equals to zero, therefore the spectra of the NMR that does not shown by that element or compound. Yes, what the source of NMR spectro? Sir, NMR is not the part of mine. uh, What our topic is nuclear chemical kinetics electro. Yes, yes, sir. nuclear chemical kinetics electro and gaseous state. No, sir. Uh, Chemical kinetics, electrochemistry, chemical equilibrium, and nuclear chemistry and rotational spectroscopy. Okay, no problem. And next move on rotational. What the main application of rotational? Yes, rotational spectroscopy is a type of molecular structure, molecular spectroscopy, in which we determine the bond length of any compound, and the also determine the radicals or atomic masses and the moment of inertia that is placed in between the compound, that is to be determined by rotational spectroscopy. Yes, what the source of rotation spectra? Source. Yes. The source that are used in rotational spectroscopy is gun diode and cholesterol. Basically, the microwave radiations are used in rotational spectroscopy. Yes, what the selection rule of rotational spectra? Now, how to determine of this selection rule in rotational? Explain briefly. Yes, sir. The selection rule for the rotational spectroscopy is the rotational quantum number, which are changed by plus one and minus one. The plus one indicates the absorption, and the minus one indicates the emission spectra. And the delta J is equals to plus minus one, and it is used because the energy gap, if the molecules are jump from one energy to another energy level, the difference between the quantum number is equals to one. It cannot be gone from one and first energy level to third energy level. Uh, it is the significance, sir. Yes.
Rotational spectra, one term used is V, work constant. What the main application of V in rotational spectra? Yes, sir. Sir, the main application of a B, that is rotational constant in the rotational spectroscopy, that is used to determine the moment of inertia of the molecule. That is the basic application of that. Yes, sir. Yes, what the formula of energy of a rotational energy labels, and what the formula of energy difference between rotational energy labels? What will Okay, the sir. Sir, the formula for the energy level of a rotational spectroscopy is H E is equals to H divided by 8 pi square I C into J plus 1 centimeter inverse में. So this is the formula for energy, and the formula for spectral lines energy, that is equals to 2b J plus 1 energy level difference. ये है sir. Vj J plus Where 1? J is Yes. where J is equals to rotational quantum number, it is starting from 0, 1, 2, 3, 4. Yes, what the uses of these formula in rotational? Yes, sir. For in rotational spectroscopy, the energy formula is used to derive the rotational spectra. On the basis of energy, we can determine the energy level differences uh, and the phenomena of absorption and emission in the process, that can be determined on the basis of a spectra, and the spectra is formed on the by calculating the value of energy for different levels of rotational quantum number. Yes. What the difference between rigid rotator and non-rigid rotator in rotational spectra? And what the main application of Yes. each one? Okay, sir. Sir, basically the in rotational spectroscopy, the rigid rotor are the considering the rigid rotor molecule, like the rigid rotor, there is no change in bond length because only there is a vibration of that molecule. Therefore, bond length is not changed, and if there is a no bond length change, there is no kinetic energy. There is no potential energy in between that. Therefore, the potential energy for the rigid rotor molecule is equals to 0, and for non-rigid molecules, that is like a spring where the bond length is changed, and due to bond length, their potential energy is not equals to 0. This is the main difference between non-rigid and rigid rotor. What the selection rule of both one? Hmm. Sir, the selection rule for the rigid rotor, that is equals to delta J plus minus 1. For non-rigid rotor, it is equals to, it is same, sir, for both. Why? What the reason? Both selection rule is same. Sir, because for calculating the energy level for non-rigid rotor, we are considering non-rigid rotor as a rigid rotor. Therefore, the selection rule is same. Yes, good. Next, what the formula of centrifugal constant D? Sir, it is equals to h square divided by 32 pi square h ka power 4 I square r c square. Yes, D is equal to 4VQ upon V bar square. Final formula. Yes. Yes, sir. What the application of these in rotational? Sir, which rotation? Rotational spectroscopy. Yes. What the
What the main application of centrifugal constant D in rotational spectrum? Sir, because the non-rigid that is used in the non-rigid rotor basically. So for non-rigid rotor, there is the molecules are move in the circular motion, and therefore the centrifugal force of distortion is acting on that, and therefore we add the centrifugal distortion value in the energy equation and uh, uh, energy equation. And by using the centrifugal force value in the energy equation, we are concluded that the centrifugal force in which that is the circular motion, therefore the circular motion area that is equals to pi r square. And by using the pi r square value in the energy equation, we are conclude that the bond length b, that is rotational constant value, is inversely proportional to r, that means bond length. So this is the basic thing for the non-rigid rotor, that is rotational constant value is inversely proportional to the bond length for non-rigid rotor. Yes, good. Yes, what is polyatomic molecules? What the main application of polyatomic molecules in rotational spectrum? Yes, sir. Sir, the polyatomic molecules are the molecules that are combined by the greater than the number of elements that are used in the molecule are greater than two. Okay, two or three means large number of molecules are combined. A large number of elements are combined to form a molecule that is called as a polyatomic molecule. Basically, polyatomic molecules in the rotational spectroscopy is four types. First one is the linear, asymmetric, symmetric top, and spherical molecules. Basically, linear molecules are considering as the molecule which are vibrating on its surface. Means basically basically we are considering the 3D molecular structure in rotational spectroscopy, but for 3D molecular structure it is difficult to arise it. Therefore we are considering the and therefore we are considering the xyz plane in the rotational spectroscopy. Basically for linear spectroscopy. So for linear example is HCl, that is on the plane, on the x plane, x axis. Sir, can I explain on board? Yes, yes, sure. Yes, sir. Yes, sir. For linear molecule, we are using in rotational spectroscopy that is three-dimensional axis, and considering the linear molecule that is HCl. HCl is a linear molecule. Here is a H and here is the Cl. Considering it is a x axis, it is a z axis and it is y axis. तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो HCl के मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक जगह पे, जैसे हमने x एक्सिस को रोटेट करना स्टार्ट किया, लाइक यहाँ पे x एक्सिस पड़ता है और इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो ये HCl मॉलिक्यूल यहीं पे रोटेट करते हैं, मींस वो चेंज नहीं होता है, उसमें जो रोटेशन है उसका वो चेंज नहीं होता है, एंड देयरफॉर चेंज नहीं वो रोटेशन चेंज नहीं होता है, तो हम इसको ये बताते हैं ये रिजिड रोटर की जैसे एक्ट करता है, और रिजिड रोटर की जैसे एक्ट करने की वजह से इसमें डायपोल मोमेंट होती है और ये हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है. सेकंड वन इज द एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. Asymmetric molecules, like an example of asymmetric molecule, asymmetric top molecule like CH4, like C, H, H, H and H. So basically for CH4 यहाँ पे क्या होता है कि जो सिमेट्री मॉलिक्यूल है, लाइक वो ऊपर से ऐसे घूमता रहता है ऐसे, तो ऊपर से
घूमने से कैसे, अगर हमने यहाँ से एक्स वाई जेड प्लेन को पास किया तो वो एक्स वाई जेड प्लेन जो घूमती है CH4 के लिए, इसमें क्या होता है कि जो डायपोल मोमेंट है वो सेम रहता है। देयरफॉर ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो नहीं करता है CH4 क्योंकि उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। एंड फॉर कंसीडरिंग द CH3F, इसमें क्या होता है कि जैसे हम एक्स आई वाई प्लेन को रोटेट करते हैं तो H, जो तीनों H वैल्यू है, मतलब जो तीनों H है वो अपने सरफेस पे रोटेट करते हैं, मतलब वो रोटेट करते हैं जैसे हमने आई वाई प्लेन को रोटेट किया। तो इसमें प्रोलेट एंड ऑब्लेट की जैसे दो कंडीशंस फॉर्म होती है। लाइक प्रोलेट में क्या होता है कि अगर हमने एफ एक्सिस से रोटेट किया तो वो क्या होता है, एफ एक्सिस ज्यादा रोटेट करता है क्योंकि यहाँ से 3 मॉलिक्यूल्स रोटेट हो रहे हैं। और एक्स वाई आई वाई एक्सिस से अगर रोटेट किया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं। एच हमारा कांस्टेंट हो गया है, एच और दोनों एच हमारे रोटेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आई वाई की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होती है आई एक्स से, और आई जेड भी हमारा सिमिलर टू आई एक्स की वैल्यू से रिप्रेजेंट करता है। सो ये होती है हमारे प्रोलेट जो मतलब रोटेशन करता है मॉलिक्यूल, और ये भी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। एंड आफ्टर दैट सिमेट्री मॉलिक्यूल होता है, लाइक CH4 हो गया, या फिर जो जैसे H2 हो गए, लेकिन ये जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि सिमेट्री शो नहीं कर, जिनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है, तो वो शो नहीं कर पाते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आखिरी में आता है हमारा, ये स्फेरिकल के एग्जांपल है। आखिरी में आता है हमारा, हाँ आखिरी में आता है हमारा स्फेरिकल। एसिमेट्री आता है। एसिमेट्री में क्या होती है, जो H2 मॉलिक्यूल है उसमें क्या होता है कि H2O की एसिमेट्री होने की वजह से, लाइक यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं और इसकी सिमेट्री, मतलब इसमें सिमेट्री नहीं है, सेंट्रो सिमेट्री नहीं होती है इसमें, देयरफॉर ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को शो करते हैं। तो यही होता है सब चारों। Yes. What the main application of polyatomic molecules in rotational in spectroscopy? So basically, by using the polyatomic molecules, like बेसिकली फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करती है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है सर। यूजेस क्या है इनके, यूजेस क्या है? ये जो निकाले गए लीनियर, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, स्फेरिकल, किस लिए, क्या पर्पज क्या है इनका? सर पर्पस इसका, सर पर्पस यही है कि जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज कर सकते हैं, मतलब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर सकते हैं हम, यही यूज है सर इसका। इस पर्पज ये है कि जो भी मॉलिक्यूल्स उसके स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करता है ना, जैसे आपने हाँ बताया हुआ है, जैसे लीनियर में, सिमेट्री में प्रोलेट और ऑब्लेट होते हैं, ये क्या होते हैं, आइडेंटिफाई क्या करते हैं? सर, ये स्पेक्ट्रा आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूल। जैसे यही पर्पज है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन रेशियो इन रोटेशन स्पेक्ट्रा, क्या है इसका मेन एप्लीकेशन? पॉपुलेशन रेशियो वर्सेस जे, क्या ग्राफ आएगा, एक्सप्लेन कीजिए। यस सर। हाँ सर, बेसिकली पॉपुलेशन रेशियो से हम आइडेंटिफाई करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। मींस द इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, रिलेटिव पॉपुलेशन of the molecule. By considering it like an example of rotational spectroscopy where spectrum energy level J is equals to 0, J is equals to 1, J is equals to 2, and J is equals to 3. So we are seeing that in rotational spectroscopy, the energy level difference is slightly increases as we increase the rotational as we increase the rotational quantum number.
सो बेसिकली रोटेशनल रिलेटिव पॉपुलेशन क्या होती है? रिलेटिव पॉपुलेशन ये होती है लाइक इसकी एनर्जी 2 भी है, इसकी 6 भी है एंड इसकी 12 भी है। बाय कैलकुलेटिंग हम निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब कि ग्राउंड लेवल पे अगर जैसे हमने 100,000 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया, 1000 मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, हमने क्या कंसीडर किया कि ग्राउंड लेवल पे 700 मॉलिक्यूल्स है, उसके एक्साइटेड लेवल पे बाय चांस 700 हो गए, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो बेसिकली रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द एक्साइटेड स्टेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द ग्राउंड स्टेट, and that is defined as the rotational relative population of a molecule on excited state ratio to the ground state. ये होती है relative population. Basically relative population are derived by the Maxwell के equation थी like nj divided by n0 is equals to e raised to power minus k divided by e raised to power minus e divided by kt, where k is the Boltzmann constant and e is the energy of rotational spectroscopy. यहां से हम डिराइव करते हैं लाइक हमारे पास ये मिल गया। अब हमको क्या करना है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंटेंसिटी बताना है। लाइक हमने 700 मॉलिक्यूल रखा, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल रखा, तो यहाँ पे 700 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 7। और कंडीशन ये होती है कि फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या रहता है कि जो मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट में है वो ज्यादा रहे और एक्साइटेड स्टेट में कम रहे, बिकॉज कि ये एक एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है। देयरफॉर एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? ग्राउंड स्टेट से होगा। तो ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने चाहिए और एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल्स कम होने चाहिए। तो इसका एक कंडीशन होता है लाइक एन जे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, 100 डिवाइड बाय 700 दैट इज इक्वल्स टू 0.14। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है एन जे डिवाइड बाय एन जीरो इज लेस देन अगर 1 है तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बेटर शो करता है एज कंपेयर टू एन जे डिवाइड बाय एन जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सो हमारी कंडीशन ये लानी है और हमारे पास ये है। तो ये जो 0.14 है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर रहा है। बेसिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है कि डीजेनेरेसी आ जाती है उसमें। लाइक डीजेनेरेसी हाउ द मल्टीप्लिसिटी क्या है अरेंज होने के मॉलिक्यूल के डायटोमिक मॉलिक्यूल में। So the multiplicity or the degeneracy can be calculated by using Gj is equals to 2j plus 1। ये होती है spin multiplicity और degeneracy of diatomic molecule। बेसिकली हमारे पास क्या था nj डिवाइड बाय n0 e raised to power minus e डिवाइड बाय kt, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब इसमें हम gj यानी डीजेनरेसी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, that is equals to e raised to power nj divided by n0 e raised to power minus e divided by kt into gj is equals to 2j plus 1 centimeter inverse। Putting the value of e, we are getting as e raised to power minus b j plus 1 divided by kt 2j plus 1। ये हमारे पास वैल्यू मिल गई। अब इसी वैल्यू के बेसिस पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसे हम इंटेंसिटी का ग्राफ बोलते हैं, और इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट होती है इन बिटवीन एनजे डिवाइड बाय n0 यानी रिलेटिव पॉपुलेशन डिवाइड बाय रोटेशनल क्वांटम नंबर। यहाँ से हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम रोटेशनल क्वांटम नंबर की j की वैल्यू इंक्रीज करते हैं 1 2 3 4, तो हमारी ग्राफ क्या होती है धीरे धीरे इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही एक्सट्रीम लेवल पे जाने लगती है लाइक 4 3 7 ऐसे 4 5 6 7 ऐसे होती है, तो ये ग्राफ हमारे डिक्रीज होने स्टार्ट करती है। जो हमारा पीक यहाँ पे मिलता है उसको हम बोलते हैं जे मैक्स यानी हाईएस्ट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एंड हाईएस्ट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यहाँ पे दो यही होता है सर, इंटेंसिटी का ग्राफ और ये इंटेंसिटी का डेरिवेशन। यहाँ से टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है इसमें। लाइक अगर टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया तो हमारा nj डिवाइड बाय n0 की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। अगर हमने b की वैल्यू को इंक्रीज किया तो nj डिवाइड बाय n0 की वैल्यू डिक्रीज होती है।
तो ये दो इफेक्ट होते हैं सर इसमें. Yes, good. Yes sir. Next value determine करते हैं Gmax value. Yes sir. Gmax value Formula. yes कैसे निकालेंगे? Sir, formula for Gmax value is equals to under root of k divided by 2hc minus 1 by 2. This is the formula for Gmax. क्या यूजेस है इसका एप्लीकेशन क्या है? Sir, for maximum intensity, we are calculating Jmax. At Jmax is the rotational quantum number at which the intensity is maximum for the rotational spectroscopy. Yes, any drawback and limitation of rotation spectra? Yes, sir. Sir, rotational spectra is basically used for gaseous molecule. It is not for the solid and liquid molecule. So this one is the drawback for the rotational spectroscopy. And the second drawback is the for rotational spectroscopy we have to consider the permanent dipole moment molecule, and it is not used for the normal diatomic molecules like H2, N2. So this is the basic drawback for the rotational spectroscopy. Yes. Next, move on chemical bonding. Yes, what is the main application of chemical bonding in chemistry? Explain. Sir, nuclear chemistry is my topic. Nuclear, chemical kinetics, electro, or rotational. Yes, sir. What topic? 5 number? Chemical equilibrium. Yes, chemical equilibrium. An application. Sir, the main application of chemical equilibrium is used to predict the direction of a reaction by using by uh, considering the equilibrium situation, and the second one is to determine the control reaction. Like if we know the equilibrium point at point of the reaction, we are controlling the reaction by using the different by using the different factors like temperature, pressure, concentration. We are controlling the reaction. uh, and the third point is it is used to determine the extent of reaction in the. Yes, what's the difference between chemical and ionic equilibrium? Yes sir. Sir, basically chemical equilibrium is the equilibrium situated in between the uh, situated is in between the rate of where the concentration of product and the concentration of reactant is almost equal. But in the ionic equilibrium, we are considering the ions that are ionized and non or unionized. So basically, the equilibrium that is situated in between the ionized ions and the unionized ions. So this is the chemical ionic equilibrium, basically. And other, what is the difference between chemical equilibrium and dynamic equilibrium? What's the difference? So basically, in chemical equilibrium, dynamic equilibrium is the example of chemical equilibrium. In dynamic equilibrium, there is the rate of forward reaction is equals to the rate of backward reaction, but the reaction is not stopped till that. The reaction is proceeding with the same constant velocity of both the reaction, like in forward reaction and in the backward reaction. Yes, what's the difference between chemical equilibrium and equilibrium constant? So chemical equilibrium is the condition of a reversible reaction in which the amount of reactant and the amount of product is constant, but the chemical equilibrium constant, uh, that is particularly a constant that is determined the ratio of a product divided by the ratio of product to that of a reactant at the equilibrium condition, that is called as the equilibrium constant. Yes, next, what is the difference
What the main application of homogeneous and heterogeneous equilibrium? Application. Sir, equilibrium is basically two types: homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. So basically, homogeneous equilibrium application, that is the equilibrium situated in between the molecules that are in the same phase. So for same phase equilibrium, we are using homogeneous equilibrium. And for the different phase equilibrium, like solid is equilibrated with gaseous molecule or liquid molecule, therefore at that condition we are using heterogeneous equilibrium. Yes, good. Which factor is affecting in equilibrium constant in chemical equilibrium? Yes. So there are five factors that affect the equilibrium constant. Basically is temperature, concentration, catalyst, addition of inert gases, and the fifth topic is pressure. Yes, sir. The pressure is also affect the equilibrium constant value. Yes, good. What is Lee-Chaletier principle in chemical equilibrium? What the main application? Which is Yes, sir. Yes, sir. Sir, basically the Lee Chatelier's principle are the principle that are determined that the equilibrium state is disturbed by changing the factors like temperature, concentration, pressure, and addition of inert gas or catalyst. So these are the this is the Lee Chatelier principle that says that equilibrium condition is disturbed by changing the these factors. So this is basically the Lee Chatelier principle, and the application of Lee Chatelier principle is that Lee Chatelier principle is says that if the reaction is proceeding in the forward reaction, basically reaction is forward reaction proceeding, and have to if we have to determine the uh, that means the reaction is in the forward direction. Okay, so if the reaction is forward direction, we don't know what is the product is formed. Therefore how much amount of product is formed, like product is formed is very large amount of product is formed, and therefore the backward reaction is start. So we don't know about that. Therefore Lee Chatelier principle are used like by changing any factor of that is suitable for that condition. We are reverting the reaction like in the backward direction, or we are लाइक हम जैसे हमारा प्रोडक्शन हो गया प्रोडक्ट का, तो वो लार्ज अमाउंट में हो गया, तो वहां से हम प्रोडक्ट की वैल्यू को मतलब प्रोडक्ट जितना फॉर्म हुआ है उसको हटा सकते हैं। लाइक इंडस्ट्रीज में ऐसे होते हैं कि उसके प्रोडक्ट को हटा दो कि वो फॉरवर्ड रिएक्शन में ही फिर से वो रिएक्शन प्रोसीड कर दी जाए। तो ऐसे प्रोडक्शन में इसका एक यूज होता है सर, ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। yes, good. Any drawback and limitation of Lee-Chaletier principle? Sir, drawback of Lee Chatelier principle are that sir, it disturbs the equilibrium conditions. Yes, what is the beneficial of Lee-Chaletier principle in human life, in real life, our society, any point? Sir, basically the Lee Chatelier principle in human life, सर एक ह्यूमन लाइफ एग्जांपल है, लाइक हम सीसॉ पे हैं तो देयर इज इक्विलिब्रियम इज सिचुएटेड। लाइक दो बच्चे सीसॉ पे खेल रहे हैं, और अगर वो सीसॉ में एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहे तो वो खेल नहीं पाएंगे। तो उनकी फोर्स हम जैसे ही फोर्स वहां पे लगाते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल लगाते हैं, लाइक फोर्स हम एक पर्सन का इंक्रीज करते हैं, दूसरे पर्सन का डिक्रीज करते हैं, तो वो खेल पाएंगे। दूसरा है कि हम जैसे हमारी एक स्पीड पे कार चल रही है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट है, लेकिन हमको कहीं जल्दी जाना है तो हम अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे।
तो ये एक अजम्पशन हो गया सर टीचर क्लियर का। Yes, good. और तीसरा सर सप्लाई एंड डिमांड के लिए भी है, लाइक जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है तो हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज करें, वो इक्विलिब्रियम पे सिचुएट ना रखें, तो ये है सर। Yeah, next is acid, base, and salt in chemical equilibrium. Yeah, इसका what the application? सर एसिड बेस एंड सॉल्ट इन केमिकल इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन। Sir, acid is basically determined on the basis of three principles: Arrhenius, Bronsted, and Lewis. So basically, Arrhenius के concept से ये पता चलता है कि when the acid is dissolved in water, there is a formation of H plus ions in the large amount. So therefore, that is considered as acid. According to Bronsted, if there is a formation of a proton, when there is formation of proton, that is called as base. And according to Lewis, if there is a vacancy or the vacant orbital that is present in the compound, that is considered as acid. So this is the acid, and the bases are the compound which are from OH minus in the solution. That is called in on the basis of Arrhenius. When it dissolve in the water, that is from the OH minus solution, OH minus ions in the majority. Therefore, it is considered as a base. And they according to Bronsted, the H plus ion acceptors are called as base, and according to Lewis, the compound has lone pair of electrons that is considered to be Lewis base. So the main application of these three on the chemical equilibrium, like if we consider a reaction, the reaction in the reaction, these three factors are used. That is the basic application of acid base. Yes, good. Any limitation of Arrhenius, Bronsted, Lewis acid base concept in chemical equilibrium? Any limitations? So limitations of Arrhenius, that it is not a perfect definition for Lewis for acid. Like acid are the molecules which are accept electrons, which are donate protons, or which are releasing H plus ions. So though the proper definition for acid or base, that cannot be given by Arrhenius, Bronsted, and Lewis. Therefore, this is the limitation for all these things. What is pH? What is the meaning of pH? Full form of pH and uses, application, drawback, limitation. Explain one by one. Last topic. Yes, sir. So basically, the pH is the standard of or potential of hydrogen. It is stand as a potential of hydrogen. It is the value above that is the range between 0 to 14. In between the range of 0 to 7, we are considering these are the acids, and above the 7 value, these are considering as the bases. pH is used to deter pH formula is equals to minus log of H plus. If we know the concentration of H plus ions in the solution, we are calculate the pH, and on the basis of pH, we are determining which of the acid or strong acid or weak acid, या फिर what the nature of the compound that are present in the solution by determining the pH value. So basic the use of pH is the acid, base, or the neutralization or salt that are present in the compound, and the like salt that is present on the pH 7 range. So these are the application uses and the standard. We are determine the dissociation constant value from the pH value also, and the pH are also used in electrochemistry for determining the potential of the cell, like hydrogen. So these are the applications, and pH are also used for equilibrium conditions.